हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हैप्पी मंडे। ट्रेडिंग चालू हो चुका है। हमारा M6 मार्केट इज ओपन। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो भी खुल चुका है फ्रॉम ऑलमोस्ट 3:30 AM टुडे। तो एकदम जम के मार्केट का गेम जो है वो से हमें समझना होगा एंड लेट्स मूव ऑन टू इट। तो ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये these are usually my popular trading setup that I personally use this one for my ट्रेडिंग, जिसके जरिए हम लोग यूजुअली कमोडिटी को देखते हैं, बट सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो यूज द अदर वन, सो मैं उसके जरिए भी एक बार देख लूंगा। सो लेट मी हाइड दिस वन एंड सेट इट अप कि ये कमोडिटी हम लोग देखेंगे, मतलब we'll have to set it to commodities, the fountain of gold, you already know that this is a flat green line, ज्यादा हाई नहीं है, तो it is not strong enough, it is just a day closing up. Rainbow candle going lower, this is the rainbow candle, you can call it rainbow candle going lower दिखा रहा है। We are likely to see both sided volatility. अनफॉर्चुनेट बात ये है कि व्हाइट क्रॉस जो मिनिमम स्टॉप लॉस, अगर ये लॉन्ग टर्म लाइन की ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता तो बेहतर होता, इट वुड हैव बीन अनदर गुड साइन ऑफ अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। बट अभी भी जितना लग रहा है, इट इज होल्डिंग अबव दिस लाइन, ऑब्वियसली सम रेजिस्टेंस, दीज आर वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस। So if copper has to really fall from somewhere, pieces will be the very likely zone की 893 to 895 area। रादर आज जो हमें दिख रहा है, रादर जो आपको ये चार्ट में दिख जाएगा, दिस इज अ मार्कर चार्ट और जस्ट सिमिलर टू द लाइन चार्ट। तो ये मार्कर चार्ट हमें रादर क्लियर पोजीशन दिखा सकता है। सो मार्कर चार्ट में एक मार्जिनल लोअर फॉर्म, तो इसमें दिस दिस गोइंग डाउन ऑफ कॉपर, ये जो कॉपर नीचे जा रहा है, दिस इज इंटरनेशनल चार्ट हम लोग देख रहे हैं। इंटरनेशनल चार्ट या M6 आप देखिए, M6 में ये जो कॉपर नीचे की तरफ जा रहा है लार्जली, देयर इज नथिंग टू बी अलार्म्ड अबाउट। इट इज नॉट इवन बिलो द प्रीवियस लो, और मेन जो स्विंग बॉटम से तो काफी दूर है। इट इज वे वे बिलो ये जो ट्रेंड लाइंस का लेवल है उससे भी काफी दूर है। तो नेक्स्ट जो कॉपर का, जो लोग इसमें ब्रेकआउट बाय नहीं खेले, यू कैन एंटर अबव ओनली 876 के ऊपर जो क्लोजिंग होगा। आज भी हो सकता है तब जब, क्योंकि ये एक लेवल बना चुका है, टर्न दिखा है, तो 876 के ऊपर क्लोजिंग के डेफिनेटली दैट विल बी कंसीडर्ड अ न्यू स्ट्रेंथ, न्यू मोमेंटम। तो वैसे आप you can go for, this is where the situation is with the rainbow setup. This is broadly we have gotten a right time buy signal and it's so far it is up. If we see, we are marginally in the positive, marginally हम लोग ब्रेक पॉजिटिव में है from this one and further ज्यादा अभी which can still go up, but ये this is the main resistance, हो सके बढ़ के it start falling from here, ultimately the sell trend probably the one who will win। so हमें थोड़ा लाइट फुटेड रहना पड़ेगा इसमें, मतलब we are quick to move, tighter stop loss, and I will not prefer stop loss near 861 863 kg because this is a good long game। yeah, if you want to make close, then the closest stop loss, at least for today, ये जो आज correction हो रहा है, we don't want to be stopped out because this is a very minor correction that is happening। ये कैंडल का साइज दिखा रहा है कि it is still bulls are holding the picture, majority of the candle is green। कुछ कुछ जगह पे जरूर कॉन्सर्न है, जैसे बाय ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी लो है। मेन जो गेम खेलने की रिकमेंडेशन आ रहा है, दैट इज सेल ब्रेकडाउन और सेल रेजिस्टेंस डिस्पाइट हैविंग ग्रीन कैंडल, मतलब रेजिस्टेंस जरूर लेने का हाई रिस्क है इसमें। एंड मेजर जो रेजिस्टेंस है, एक तो यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ एरिया जो है 874 उसी के पास ले रहा है, 875 एक साइकोलॉजिकल लेवल, बट मेन वन इज दिस 894 के आसपास। Then we have aluminium bullishness के बाद ये देखिए, दो we don't have a red cap अभी तक नहीं मिला है, बट कैंडल पिछले कैंडल से मार्जिनली लोअर है, मतलब एल्यूमिनियम भी करेक्शन फेस कर रहा है या करेक्शन और करेक्शन फेस करना लाइकली है, बट स्टिल लुक्स बुलिश। बट ये है मेन रेजिस्टेंस 237, जिसके आसपास से रेजिस्टेंस लेना चालू किया। इफ यू लुक एट, नो इसके पास इस पे ही रुक गया,
but overall this is the main resistance 238 area. अगर further rise हुआ भी जो which is very much possible because candle is still blue, price action is bullish, short momentum is bullish, so yeah, zinc can go further up. And monthly, sorry, aluminium, not zinc, aluminium can go further up. Sorry for that one. This is still in the neutral zone दिखा रहा है नीचे यहाँ पे स्ट्रेंथ मीटर में. सो एल्यूमिनियम इज मोर ऑफ अ न्यूट्रल, बट हम लोग इसको एक्सपोजर रखना प्रेफर करेंगे टू सम एक्सटेंट. This is the main resistance. If it breaks, aluminum is definitely likely to test out this area. So if it breaks मतलब ये जो flat line आप यहाँ से पूरा draw करेंगे. You have to draw it here. Match means this is the whole area. This is the main resistance zone. Flat lines in the rainbow setup act as a strong resistance. Let's look at what is the other one. This is turning basically flat, flattish turn ho raha hai. It is turning flat and it may see a correction, a further correction drawdown, which is visible here as well. It is basically flat ho raha hai, but I think it's sudden push aayega. And this week main jo focus hai that is on the inflation data. इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर मेजर फोकस. यूएस का इन्फ्लेशन डेटा विल फर्दर क्लियर अप द मूव फॉर कमोडिटीज. अभी लुकिंग एट द करंट ट्रेंड्स इट लुक्स लाइक वी शुड गो फॉर रादर बाय ट्रेंड्स. नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं जिंक. वी आर टॉकिंग अबाउट जिंक. ब्यूटीफुल रन, हम लोगों को बढ़िया रन मिला है. और उसके बाद देखिए ये जो आज का कैंडल है ये नया हाई नहीं बना पाया. दैट मींस सम मोमेंटम इज गेटिंग लॉस्ट. RSI भी थोड़ा फ्लैटिश टर्न कर रहा है, बट देयर इज स्टिल नो रीजन टू एग्जिट एनी मेजर. If you are feeling you should square off, yeah, we can square off some of the money. You can take some money home and wait see. But पूरा exit तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं सोच पाएंगे. And very likely if we look at the bigger picture, this can be a bigger move actually. Weekly में अगर momentum sustain करता है, unfortunate part it is currently breaking via a flat zone. ऐसा possibility और नीचे आ जाए and then breaks via slanting zone, ये भी possible है. या it goes up further कि 287 ये जो main resistance है यहाँ से resistance लेना चालू कर. So it has just taken a pause. अभी तक ये कह भी नहीं पा रहे हम लोग कि it is a major slowdown. We don't have a red caps. Short term momentum is still bullish. Rather इसको just a pause बोल सकते हैं. A very early morning, early Monday beginning. Too early to decide. But if you are feeling any kind of tense, like if you are over positioned और आपके पास से about 50 lot है या 10, even if 10 lot है, you can consider some profit booking into the. अगर आपके पास 2-3-4 lot है, you can continue holding them up. And if you have entered at the right time, जहाँ पे हम लोग बात किए, जैसे एल्यूमिनियम में we are waiting. जैसे जैसे एग्रेसिव होगा, जिंक का चार्ट बेटर था. We did not have that resistance what we are having in aluminum and copper. But so zinc is much better and zinc looks to be further bullish to me. Next is lead. निकेल का बाद हम लोग वैसे नहीं करेंगे. लेड इट इज बाय सिग्नल, उसके बाद करेक्शन, बैकग्राउंड येलो, लॉट ऑफ कलर चेंजेस गोइंग ऑन. Main resistance 192 as we discussed, it can spend lot of time in the zone. So it could be bullish, it could be bearish. Looking at the chart is very difficult to say. Let's see if unless further clarity comes, there is not much point to hold these, say long side or short. It will be just idle money. It's better will be कि हम लोग treasury पे पैसा park करें in the short term treasury and get the interest rates. नेक्स्ट इज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल. पहले देखते हैं इंटरनेशनल सिल्वर. जिंक इसमें भी देख सकते हैं. जिंक जस्ट टेकिंग अ टर्न
but it is too early to say kya hoga. We read last time also it bounced back. So too early to say, but RSI is a sort of a little bit of overbought zone, but overbought zone it can keep on staying. So XAG USD has silver similar, a good comeback, strong comeback. He has 29.31 और यही जो empty line का level से ये bounce back कर रहा है. This is very good. Main जो resistance है अब $32. आज अगर आज silver का largely correction हो रहा है, Monday morning थोड़ा bounce back we are seeing in the dollar, and that's why commodities are also suffering. So जैसे जैसे यहाँ पे आज correction, this could be an opportunity to re-entry. It broadly remains bullish. Buy support and sell resistance बोला जा रहा है. Preferred trades यहाँ पे. This is buy trade win probability 61%. Last day due to non-farm payroll में जो लोग मेरे साथ थे last Friday, I hope आप लोगों को बहुत मजा आया. You enjoyed it. We saw the major movement. Though part of my silver which I wanted to enter and place the order, उसमें stop loss it was. You saw the big sharp move in silver before it's jumping back. So silver has gained significant strength. So further इसमें build up, ये जो correction आज मिल रहा है इसमें build up ही अच्छा लग रहा है मुझे. So I'm going to use this correction because outlook is bullish and this is going to be the major support now. So I don't think if silver is consolidating अभी immediately, very small window है ये देखिए, slanting zone. It can break below this, but this is going to be a very strong area now for silver. $28.4 to 29.3. I don't think silver will be coming back below that level. और इसमें हम लोग silver को देख सकते हैं, Indian silver, it is at a level, probably will be taking a resistance, correct? And that would be an opportunity to re-enter. जो लोग ये सेटअप इस्तेमाल करते हैं, आई होप आप रूल लिख चुके हैं और रूल लिखने के हिसाब से ही आप ट्रेड करते हैं. So this is silver, great. Then we have crude oil. Crude oil का चार्ट इंटरनेशनल हम लोग पहले देख रहे हैं. US oil spot, oil is giving out a correction. It is clear, हम लोग को वो दिख ही रहा था anyway from the momentum loss over. आज एग्जिट सिग्नल भी आया है. दिस इज वेरी गुड. इसके साथ साथ क्रूड ऑयल का पोजीशन वैसे भी मैंने थोड़ा हल्का किया था. अब क्रूड ऑयल में जो फर्दर करेक्शन आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, दैट मींस क्रूड कैन कंसोलिडेट फॉर नाउ. कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी भी बढ़ चुका है. सेल का उतना चांस है नहीं अगर डेली और डेली चार्ट के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूं. और यहाँ पे देखिए फॉलिंग स्ट्रेंथ भी फॉल कर रहा है, ये मीटर में भी दिखा दे. तो स्टिल द स्ट्रेंथ दिखा रहा है गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, whereas natural gas and WTI significantly weak. तो अब क्या करेंगे, इसमें एग्जिट तो हो गया. अब क्या होगा, एग्जिट तो पहले थोड़ा किए थे इसके साथ जो फ्यूचर और ETF जो हम लोग बात किए थे, जो लोग जानते हैं इसके बारे में. So ETF का will also reduce partial quantity. And now re-entry before exiting, always remember important job is to when you decide to enter next. That is a very important. When to enter next, currently price action is not bullish, it is fight, neutral. I want the price action bullish. तो price action bullish का alert दे दी. साथ में short term momentum is bearish. तो short term momentum भी इसका alert दे दी. Short momentum bullish. इसके साथ साथ अगर बेचने का मौका मिले मतलब सेल. तो मैंने रेनबो सेल ये सिग्नल भी डाल दिया. मतलब रेनबो सेल मतलब दिस वन. तो एटलीस्ट इससे मतलब आप जो भी सिग्नल लगाए आपके हिसाब से यू हैव टू बी रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट मूव्स जो होगा जिसमें आप कुछ एक्शन लेना पसंद करेंगे. नेक्स्ट इज ये काम हो गया. इस काम के बाद सिल्वर, विल लुक एट द गोल्ड.
सिल्वर को हम लोग देखे थे, गोल्ड इज सिमिलर, गोल्ड हैज रिमेन बुलिश बिकॉज गोल्ड ये जो मेन लेवल है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये जो मेन लेवल है इसके ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है। गोल्ड इज better storage of wealth than silver. So I remain bullish on gold. I still do not see any reason to back out just because today morning is the correction, especially on gold. If you feel backed out in silver, okay. But I do not see any major reason to get out of gold. Only there is a major risk window is there. I would say 24 July. So from 11th, like currently from 9th of July to 24th of July, there is a risk that gold might falter. And उसके बीच में ये यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, but still even that I think gold will be able to defend this level 2326 के नीचे. I don't think gold is going to move. In fact, I don't think gold is going to move below 236 zero immediately. But that is one data that I'll keep a lookout for. Yeah, Fed Chair Powell's speech is there. That is another one to look out for. Okay, gold may face, but gold overall is bullish. Fundamentally, it is also somewhat bullish, and technically, this is looking bullish. So gold में bullish रहना ही मेरे हिसाब से सही लग रहा है। क्रूड ऑयल इंडिया का चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट ही ज्यादा देख रहे हैं बिकॉज आई यूज दिस वन फॉर ट्रेड, सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू स्पीक। तो क्रूड ऑयल ये जो है देखिए करेक्शन इंटरनेशनल हम लोग देखे, इंडिया हम लोग देखे, आई थिंक आप सिमिलर इसमें भी देख पाएंगे। लेट्स लुक एट क्रूड ऑयल। या दिस इज द टर्न अराउंड डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर के हिसाब से दिस वाज द स्टॉप लॉस 6944, स्टॉप लॉस के नीचे टूट गया, ऑल आवर मोमेंटम क्रॉसेस हैज हैपेंड। आप ये मोमेंटम क्रॉसेस जानते हैं? Sorry, all the momentum crosses हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल गैस के चार्ट को। So natural gas chart will be the last one. We are going to take a look at India natural gas. India natural gas has been bearish, but हम लोग expect किए थे कि यहाँ पे it can be a stopover. I think natural gas is pausing for the moment. It is good. This pausing is very good because हमें फिर से बेचने का मौका मिल सकता है। तो ये pausing पहले होना पड़ेगा। ये कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी में दिख रहा है, करंटली नो एग्जिट हैज कम येट, एग्जिट अभी भी नहीं आया है। वी डोंट हैव अ ग्रीन सॉक, दिस इज अ ग्रीन सॉक, ग्रीन सॉक्स नहीं है तो वी डोंट हैव एन एग्जिट। शॉर्ट मोमेंटम स्टिल बेयरिश, सो वी डोंट हैव एन एग्जिट। The strength meter is still falling in strength, natural gas, so it remains bearish. But यहाँ पे this is a level, so I still expect natural gas to pause for the moment, और जब वो pause करेगा तब then we'll place our next alert to trade. So ये रहे हम लोग, we discuss copper, aluminium, zinc, lead, natural gas, crude oil, gold and silver. These are my outlook, these are my trade, this is how I'm placed in the market, bullish or bearish. So I hope you enjoyed this video. All the best to you from my side, and as always, happy trading.